Assalamu alaikum. Naveed, are you there? We started. जी वी आर स्टार्टिंग अनम्यूट कर दीजिए ठीक है वीडियो ओके अस्सलाम वालेकुम जी कैन एवरीवन हियर मी एक Yes, we can hear you. okay so again assalamu alaikum again and welcome all of you once again to our corporate briefing session. I can see that most of you were with us in our last session as well. So, with a view to keep our analyst and investors fraternity updated with how Macter is progressing and what are our, how we are going forward with our vision, we have kept this briefing session. So, our CEO, Mr. Asif Misbah, is also with me today. We'll start our presentation. Yeah, go. Next. Ji, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Naveed, can you move to the next slide, please? Next. Okay. So this is a snapshot of our half-year performance. Our sales has shown significant growth over last year. We are at 4.9 billion versus 3.5 billion over the same period last year. Our gross profit has also grown by 51%. It is at 1.4 billion during the same period last year. Margins, as you can see, have shown significant improvement by 4%. This is a result of better product mix, high profitable new products, and overall some stability in exchange rates. Operating profits similarly have grown by 142%, standing at 625 million versus 258 million last year. Our PAT is at 392 million versus 195 million during the same period last year. It's growth of 101%. The EPS has doubled from 4.26. We are at 8.56 during this half. So overall, the sales, all segments of our sales have shown double-digit growth. Our core prescription business and export have grown by a high double-digit. Gross margin, as we have already discussed, is improvement in gross margin as a result of better sales mix and contribution from profitable prescription and export business. And this, the operating profit is a trickle-down effect of our better sales mix and higher gross margins. The operating profit for the half year, as discussed, is 625 million. It's a 142% growth. So here we are showing a trend of different matrices over a 5-year period. As you can see, this is showing a positive trajectory. The GP margins have consistently increased from 36.85% in 2020 to 45% during this half year. Similarly, the operating margins have also increased from 5.34% to 12.7%. This is a significant increase. This is a result of better absorption of our fixed expenses as a result of the increasing sales. So this is a good indication, and in the coming years, this percentage is expected to continue to improve. Okay, and finance costs has decreased, which is a result of
basically stable and decreasing KIBOR, and also good financial management at the company's level. So again, some key ratios, the trend of key ratios over a 5-year period. We discussed the GP margins have increased. The return on capital employed has also shown an increasing trend from 15.12 to 25.18 on an annualized basis as of 24-25. The earnings per share from 0.38 have consistently increased from 6.57 in 21 to 8.58 in 2023, and again in first half 24-25 it is 8.56 on a full year basis. This will surpass our previous year's EPS. So the current ratios are also stable. So here we is showing the overall industry trends, and basically broken down between how the MNCs are performing, how the national companies are performing. We can see that the share of national companies is almost increasing by 1% each year. It has from 69% in 2020, it has increased to 75% in FY24. And the share of MNCs have decreased from 31% to 25%. When I joined the industry in 94, so it was exactly the opposite in favor of the multinationals. So 1994, multinationals had 75% market share, and national companies had about 25% market share. So even though we are seeing it here, a 5-year trend, but over a 30-year trend, that's been the shift. Naveed, please. Marshall, again, among other things, this is also a good indication how the national companies are keeping up with the quality requirements and the regulatory requirements. Otherwise, in this industry, to reverse the trend, as Asif Bhai was saying, that from 75% share of MNCs, it is now 75% national companies. So the industry has kept up with the international requirements, has tried to keep itself abreast with the quality requirements as well. So the growth, again, pharma industry. Naveed, if you can just, I'd like to tell the audience that we'll quickly run through the presentation. It's already uploaded, and we'll share this presentation as well. Okay. And we can take all your questions after the presentation. Okay. Yes. So in the industry growth as of FY24 is overall at 21.5%. Again, national companies are contributing 22% and MNCs 19.9%. Macter is steadily growing, moving up the stairs of the 10 billion group of companies. We were there when we last met, but we are steadily climbing up. As per IQVIA, Macter is at 12 billion, and you can see the growth trajectory from 7.5 billion in as of March 23. We are now at 12 billion. This graph again indicates that that Macter has been basically surpassing the market growth trend. Overall, the pharma industry is growing by 21.5%, and Macter individually is growing by 34.8%. These are some of our key brands. And during the half year, our
state-of-the-art 2 new product launches in Exa, which is a heparin sodium to prevent blood clotting, and C-glutide. This is a blockbuster product that Macter has been able to launch, Pakistan's first rDNA-based semaglutide for diabetes and obesity. Overall, the industry's challenges and risks remain more or less similar, with some challenges and risks becoming more prominent than the others. The industry is basically still dependent on a lot of imported APIs. So the global API and logistics disruption remains a key area or key challenge. Increasing local and international regulatory requirements, and the rest we have discussed, the registration and pricing. Again, as the employee pool develops and becomes more and more attractive to the overall industry, so retaining critical employee pool is also a key challenge. Threats to data security and data privacy. So you cannot just sit back on the measures taken. We have to continuously upgrade and uplift ourselves against the challenges of cyber attacks. Although the devaluation this year, alhamdulillah, the situation has been better, but considering Pakistan's overall situation, this remains a concern. Okay. So for the future, our strategic priorities are the continued focus on R&D and key specialty areas, expanding our footprint in the global market to achieve that. Excellence in GMP and people development remain our core focus. So this is a brief presentation, and I invite you all to, if you have any questions, you can share with us and we'll be glad to answer. So I'll take over if you don't mind, Naveed, from here. We have some questions already on the chat. Yes. So the first question is, can you elaborate more on the future profitability of Macter as well as pharma? Do you expect to sustain the profits of last 2 quarters? Do you expect further growth in the next 1-2 years? So, जी, बिल्कुल, we expect Macter's profitability to increase. हमारा इंटरनल अपना व्यू ये है कि पिछले सालों में हमारी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के जो बेंचमार्क्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के उनके मुकाबले में कम रही है. So, and then we've been on a 3 to 4 year journey where we have transformed our operations, relooked our business models. हम पहले contract manufacturing करते थे, हमने contract manufacturing को बहुत कम कर दिया. हम पहले institutional business करते थे, उसमें margins कम होते थे, उसको हमने बहुत कम कर दिया. And our focus on R&D is something which doesn't bear fruit in 1 or 2 years. So it's a long process. You have to continuously invest. So we've been doing all those strategic investments and improvements in the company. और ये शायद रिजल्ट जो मिसाल देख रहे हैं वो पिछले सालों में भी नजर आते हैं, लेकिन चूंकि हेडविंड्स बहुत स्ट्रांग थी. So PKR, devaluation, inflation, or especially these 2 factors, delays in registrations. So, लेकिन alhamdulillah, as some of the external factors have stabilized, तो जो full उसका impact है उन सारे efforts का तो वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप हमारी profitability को almost double होते हुए देख रहे हैं. And even then going forward, when I say we expect to catch up to the industry benchmarks, जैसे अभी हमारी अगर net profitability 7-8% के ऊपर आ रही है, तो we expect this to climb to between 15 to 20% in the coming quarters and years.
not in the coming quarters, it's an organic process, but definitely in the coming 1 or 2 years हम इसको मुसलसल बेहतर करते जाएंगे. इसमें इंडस्ट्री के अंदर जो है वो definitely because of the deregulation of pricing in non-essential medicines has been a watershed moment for the industry, because आप देखें कितनी critical industry है लेकिन वो inflation pass through नहीं कर सकती क्योंकि prices control हैं. और इतना sensitive topic होता है तो कोई government भी जो है वो नहीं चाहती कि उसकी खबर आए कि जी कीमतें बढ़ गई. That's unfortunate because it comes at the cost of availability. जब आप prices को बहुत tightly control करेंगे और inflation pass through allow नहीं करेंगे तो essential medicines और medicines इनके अंदर margins कम होते हैं वो कंपनियां बनाना छोड़ देंगी. So that had been a very unfortunate kind of stance in the previous years, but alhamdulillah that's changed now. And the pricing now reflects is a good balance for a developing country कि आपने essential medicines की prices को control किया और non-essential medicines की prices को आपने जो है ना deregulate किया. So deregulation itself assures that price gouging नहीं होगी. So alhamdulillah, I think because of this factor and overall stability in exchange rate, और गवर्नमेंट की तरफ से भी फार्मा को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पे देखा जा रहा है. एंड ये जो प्राइस की जो ये इतनी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ये भी SIFC की वजह से हुई है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स फार्मा एंड स्पेशली द गुड कंपनीज इन फार्मा जो कि एक्सपोर्ट में फोकस कर रहे हैं और इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं, दे विल कंटिन्यू टू डू बेटर. एंड आई थिंक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी विल come more in line with the profitability of this industry when we look at India or Bangladesh or China, So जो हमारे regional peers हैं, हमारी profitability overall उनसे match करना शुरू करेगी इंशाल्लाह. So that was the first question. Ahmed has asked why MNC's market share has reduced and local companies have increased their share. If you ask the MNCs, they will give you a different set of reasons. And if you ask the national companies, they'll give you a different set of reasons. I think that MNCs, to be fair, struggle more, with tight price regulations and deregulation and the devaluation of the PKR. तो चूंकि वो अपने parent company से खरीद रहे होते हैं और उनकी जो उनकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो डॉलर्स में रिपोर्ट होती हैं. तो व्हेनेवर देयर इज अ डीवैल, जैसे पिछले 10 सालों में बहुत सिग्निफिकेंट डीवैल्स हुए हैं, तो वो उनको जो है ना वो उनकी बॉटम लाइन खराब हो जाती है डिस्पाइट देम हैविंग अ वेरी गुड यूनिट शेयर ऑफ द मार्केट. और बॉटम लाइन भी क्या, टॉप लाइन भी उनकी कम हो जाती है जब वो डॉलर्स में रिपोर्ट होती है. दूसरा फिर ये कि मल्टीनेशनल्स की जो फार्मा के अंदर कंपनियों की ग्रोथ उनकी न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन से आती है. तो वो न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है वो ऑब्वियसली नेशनल कंपनीज की ज़्यादा रिच होती है बिकॉज हम जेनरिक्स लॉन्च कर रहे होते हैं और मल्टीनेशनल्स की उतनी पाइपलाइन में डेप्थ नहीं होती. तो जिन मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने आप को पाकिस्तान के सिनेरियो के हिसाब से या डेवलपिंग कंट्री के सिनेरियो के हिसाब से अडेप्ट किया और उन्होंने भी जेनरिक पोर्टफोलियोज लॉन्च किए, जैसे GSK ने किए, एबट ने किए, तो आप देखें कि वो मार्केट में हैं और वो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है. और स्पेशली नाउ जबकि इन्होंने प्राइस डीरेगुलेशन कर दिया है तो अब मेरा ख्याल है कि जो कंपनियां हैं दे विल थ्राइव, द मल्टीनेशनल्स विल थ्राइव. जो कंपनियां चली गई हैं वो अफसोस करेंगी क्योंकि पाकिस्तान इज द 7th largest pharmaceutical market by volume, and it's not a market that you should be out of, and that's why multinationals have been here for such a long time. लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मल्टीनेशनल्स अपना शेयर को होल्ड करेंगी और and I think they'll have good numbers as well, profitability as well as sales growth. and हम देख सकते हैं कि GSK जैसे परफॉर्म कर रही है और एबट जैसे परफॉर्म कर रही है. तो अब एक रीज़न ये भी है कि वो थोड़ा सा मोर टेक्निकल रीज़न है इन दैट कि ग्लोबली मल्टीनेशनल्स हैव मूव्ड to specialized medicine. They've moved to biologics, they've moved to personalized medicines. और उनके लिए
बिकॉज ऑफ ग्लोबली इतनी कंपनियां हैं, इंडियन कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनीज हैं, दुनिया भर में इंडस्ट्री तो इवॉल्व हो रही है। तो देव रियलाइज के जो प्लेन जो रेगुलर मेडिसिन हैं उसके अंदर इतना कंपटीशन है कि इट्स लाइक अ रेड ओशन। सो ओवरऑल देव मूव टू higher science and very expensive medicines। तो उनके लिए पोर्टफोलियोज इतने जो है ना वो लुक्रेटिव नहीं रहते। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल जैसे BMS थी, उनका पूरा ग्लोबल पोर्टफोलियो इज वेरी स्पेशलाइज। सम कंपनीज हैव गॉन इनटू पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, उसमें एक एक जो मेडिसिन, एक एक जो पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। तो ये बिजनेस मॉडल चेंज भी जो है वो अकाउंट फॉर करता है फॉर सम ऑफ द कंपनीज दैट हैव लेफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सज्जाद ने पूछा है कि आपकी सेल्स का डिफरेंस क्यों है IQVIA से। तो IQVIA में ये सिर्फ मैक्टर का डिफरेंस नहीं होगा, ये पूरी इंडस्ट्री ऐसे रिप्रेजेंट होगी। और उसकी एक वजह ये होती है कि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो हम अपनी एक्स फैक्ट्री प्राइस पे रिपोर्ट करते हैं, और जब IQVIA रिपोर्ट करता है तो वो ट्रेड प्राइस पे रिपोर्ट करता है। तो एक डिफरेंशियल तो वहां से भी आता है। उसके अलावा ये कि जो जैसे कंपनियों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज होते हैं जहाँ पे हम ट्रेड मार्केटिंग के तहत मार्केट के अंदर डिस्काउंट्स या बोनसेस दे रहे होते हैं, तो वो उन डिस्काउंट्स और बोनसेस को सेल्स ही काउंट करते हैं। जबकि ऑब्वियसली हमारी रिपोर्ट के अंदर जो होता है वो कॉस्ट एलिमेंट हो जाता है, और वो मतलब रेवेन्यू से माइनस होता है नेट रेवेन्यू के लेवल पे लाने के लिए। तो इस वजह से ये इसके अंदर एक डिविएशन आता है। ये मोरलेस हर कंपनी के अंदर ये चीज रिफ्लेक्टेड होती है। तो इसलिए हम जो IQVIA के नंबर्स होते हैं, मार्केट शेयर के नंबर्स होते हैं, उनको डायरेक्शनल देखते हैं, और उनको अपने एक्स फैक्ट्री नंबर से मिलाते नहीं है। बट दे स्टिल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया of where different companies stand and how they are growing and how different brands are growing, and the industry knows how to adjust for this difference. अहमद का एक और सवाल है कि why do local companies have high margins as compared to MNCs? I think you're trying to ask. Is it due to local companies being more efficient or नहीं, ऐसी बात नहीं है। Multinationals are managed very well। और एक उनका ये चैलेंज डेफिनेटली होता है, चैलेंज नहीं कहते बट सॉर्ट ऑफ एक एक फिनोमेना है कि ग्लोबली ट्रांसफर प्राइसिंग होती है। जब आप अपनी पेरेंट कंपनी से खरीद रहे होते हैं तो आप आप हायर प्राइस में ले रहे होते हैं, और अपना कुछ प्रॉफिट आप इस तरह से रिपैट्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर इतने थिन मार्जिन्स के अंदर ज्यादातर मल्टीनेशनल्स ने अपने पेरेंट सोर्सिंग को खत्म ही कर दिया है फॉर जेनरिक ड्रग्स, और वो चाइना से, इंडिया से ही इम्पोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये इट्स नॉट बिकॉज दैट लोकल कंपनीज आर मोर एफिशिएंट, या इवन हमारे API सोर्सिंग चीपर है, नहीं। बिकॉज जिस प्राइस पे GSK या एबर्ट अपने ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स के API सोर्सिंग करते हैं, उस प्राइस से करीब भी हमें प्राइस नहीं मिलती, क्योंकि ऑब्वियसली उनके इतने वॉल्यूम्स होते हैं। सो आई थिंक इट्स बिकॉज कि उनकी उनकी जो देखिए बेसिकली फार्मा के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर क्या होता रहा है ओवर द इयर्स, कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, आपको गवर्नमेंट ने प्राइस दी, उस वक्त की कॉस्ट के बेसिस के ऊपर वो प्राइस और आपका मार्जिन मिला। फिर देन ओवर अ 20-year पीरियड आपकी जो है ना वो इन्फ्लेशन तो बढ़ती रही, लेकिन आपको प्राइस उससे मैच करती भी नहीं मिलती रही। तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन्स बिल्कुल कम होते चले गए। अच्छा, नेशनल कंपनीज, हम लोग चूंकि हर साल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, तो हम हर साल हमें एक सपोर्ट मिलता है फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ बेटर प्रोडक्ट मार्जिन्स। बट मल्टीनेशनल्स चूंकि वो अपने लेगेसी प्रोडक्ट्स लेके चलते हैं, उनकी जो पाइपलाइन होती है वो बहुत कम होती है। ग्लोबली वो 2-3-4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि वो पाकिस्तान में आ भी नहीं सकते। तो इस वजह से उनकी जो P&L है और उनके मार्जिन्स बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। सो आई थिंक it's a function of not being able to launch newer products with better margins in an environment जहां पे आपको प्राइस इंक्रीज नहीं मिल रहा था। अब जैसे डीरेगुलेशन हो गई है प्राइसिंग की, और अब जैसे फॉर एग्जांपल पैनाडोल है, अब पैनाडोल जो है वो इट विल बी अ नॉन एसेंशियल ड्रग, उसकी जो प्राइसिंग है वो डीरेगुलेट हो गई। अब आप देखें GSK के मार्जिन्स कैसे इंप्रूव होते हैं,
या इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स जो कि नॉन एसेंशियल हैं, यू नो, विच हैव अ मेजर शेयर ऑफ द एमएनसीज पोर्टफोलियो, उनकी प्राइसेस, उनके मार्जिन्स कैसे इंप्रूव होते हैं। तो आई थिंक ये चेंज हो जाएगा। मिक्स बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बाय सनी, आई थिंक हमारा, जो मैंने लास्ट चेक किया था, अबाउट 30% जो थे, 30 to 35% हमारे जो थे वो नॉन एसेंशियल थे, और 60% के करीब एसेंशियल थे। बट ऑब्वियसली यू नो सनी, दिस इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज जब हम नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसिंग इंप्रूव करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका जो जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा क्लियरली। और एंड सिमिलरली, जैसे हमने सेमाग्लूटाइड लॉन्च किया है, या और हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि नॉन एसेंशियल हैं, तो उनके मार्जिन्स मुसलसल इंप्रूव होते रहेंगे। सो अभी इसका रेशो ये है, और फिर मेरा ख्याल है आगे ये तब्दील होगा इन द फेवर ऑफ मे बी नॉन एसेंशियल। बट इसमें ये भी है, मैं आई थिंक फार्मा इंडस्ट्री के लिए, कि वो यू नो, देखिए इट्स अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो इवन विद नॉन एसेंशियल ड्रग्स कोई ब्लैंक चेक नहीं है कि आप यू नो कुछ भी प्राइस कर दें। इट्स अ जेनरिक मार्केट। अगर हमारे पास एक नॉन एसेंशियल ड्रग है तो 15 कंपनियों के पास भी है। तो आई जस्ट कांट इंक्रीज प्राइस एट विल, इट्स स्टिल अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये बहुत बहुत अच्छा हुआ है इंडस्ट्री के लिए, और इसको हम रीजनेबली ही डिप्लॉय करेंगे इस प्राइसिंग टूल को, यू नो, बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड बिकॉज ऑल्सो ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो आई थिंक इसमें जो भी शिफ्ट होगा वो ग्रेजुअल होगा। Then the question is, how do you see deregulation effect on pharma industry? मैंने कहा बहुत 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 अच्छा हुआ है. This is going to save the industry, and not only save, it's going to make the industry thrive, I think. And what are the challenges on the export front? Well, the challenges on the export front, you know, I think there's a lot of opportunity for Pakistani companies now. फॉर गुड पाकिस्तानी कंपनीज जो अपनी R&D में और अपने क्वालिटी में और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेंगे। उसकी वजह ये है कि द लार्जर इंडियन एंड चाइनीज कंपनीज you know are more focused on the US and the EU and the first world markets. Those markets are very lucrative, but you know they also require a lot of capital to get into, and the product development costs are much higher for these markets. And as they have been doing that, they have to necessarily respect patents more. तो अब क्या है कि इनकी इंडिया के अंदर जो है वो पेटेंट लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। जब पेटेंट लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो इंडियन कंपनीज जो हैं वो उसको वे कर रहे हैं कि हाँ सही है, पेटेंट लॉ स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बिकॉज बट दैट अलाउज अस टू फोकस मोर ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। तो उनकी जो आज से 20-25 साल पहले ये होता था कि जैसे ही कोई नई ड्रग इंट्रोड्यूस होगी दुनिया भर में तो कोई इंडियन कंपनी कर रही होगी, बिकॉज इंडिया के अंदर पेटेंट लॉस जो थे वो इतने टाइट नहीं थे। अब ऐसा नहीं है। अब एसेंशियली पाकिस्तान से और बांग्लादेश की अच्छी कंपनियां जो हैं वो compete कर रही हैं to launch new innovative molecules across the world, and I think that's a huge moment for us. तो but obviously आपको इंटरनेशनल मार्केट में सक्सीड करने के लिए you have to be at par, you have to be as competent, and you have to be as skilled as your competitors. And but the market is huge, and I think we are demonstrating in many markets that we are working that हम Indian company से पहले products launch कर रहे हैं, and if you're launching products before your competition, that's 50% of the battle won. So I think pharma industry will do very well in the export front. We are also seeing companies investing in API manufacturing in Pakistan. I think that's also very good and interesting, and we've some good case studies over here. I think Pakistani pharma industry will do very well in the coming years. सनी का सवाल है कि 37 growth in revenue, how much from a volume increase and how much from a value increase? तो इसमें ये है कि if new products obviously play a role. तो वो न्यू प्रोडक्ट्स का जो होता है वो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज के अंदर होता है, वो हम उसको वैल्यू इंक्रीज के अंदर नहीं लेते। और हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ भी इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर आ रही है।
So I would say that about 20 20s 20% of the growth, would is be from price. from price, and the about 70% 80s. increase in Yeah, volume. 20% is from price. Yeah. So Furqan का सवाल है, how's the response in semaglutide? Are people accepting the local version? Other than that, your variants are different than Ozempic. How's the response? Oh, the response has been phenomenal, mashallah. And semaglutide के अंदर जो है, now we launched in September. It's almost 9 months, and we've had a tremendous response. हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत अच्छी है, एंड ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, वो उसके क्रेडेंशियल्स देखते हैं कंपनी के, वो ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी लेकर आई है, उनके पास किस तरह की स्टडीज हैं, और व्हाट आर देयर यूएसपीज वर्सेस ओज़ेम्पिक, एंड सो क्लियरली वर्सेस ओज़ेम्पिक प्राइस डिफरेंशियल तो जो है बहुत अच्छा था, बिकॉज अगर ओज़ेम्पिक की रिटेल 25,000 थी तो हमारी रिटेल 12,000 थी. So that price differential is huge, because keeping in mind that this drug, although for obesity may be taken for a few months and then stop, but for diabetes this is a lifelong treatment. So your price is going to make a huge difference. So हमने जो है वो हम across Pakistan we've received a very good response. एंड हमारा जो एडवांटेज है, देखिए ओज़ेम्पिक को एडवांटेज है कि द पेन दे ऑफर इट इन अ पेन, राइट? सो द पेन इज इजियर टू अप्लाई फॉर द पेशेंट. अच्छा, हमारे वाले में जो है वो एक वायल है, जिसमें से जो पेशेंट है, जो यूजर है, वो इसे इंसुलिन निकालते थे ना पहले और अभी भी, कि आपके पास एक बहुत ही फाइन नीडल होती है और आप उसमें से एक स्मॉल यूनिट्स में डोज निकालते हैं और अपने आप को इंजेक्ट करते हैं. तो हमारा इस फॉर्मेट में है, लेकिन इस फॉर्मेट में होने से फायदा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 2 mg का वायल है, तो हमारा 2 mg का वायल है फॉर एग्जांपल लेट्स से 8,000 रुपीज का, और हमारा 4 mg का वायल है 12,000 रुपीज का. तो अगर 2 mg के वायल से आप 0.25 के डोज निकालेंगे तो 8 डोजेस निकलेंगे. So actually, अगर आप 4 mg के वायल से 0.5 mg का डोज निकालेंगे तो 8 निकलेंगे, 1 mg के ऑब्वियसली 4 निकलेंगे. तो इससे क्या होता है कि it becomes even more cost effective, that if you can buy a larger size vial, then you get a price benefit per dose, right? That is not available for the Ozempic pen, because उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि डोज फिक्स कर दिए हैं कि आप एक ही डोज निकाल सकते हैं, तो you can't use the bigger pen for a smaller dose, right? So ये एक, और दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है हमें वो ये है, इवन वर्सेस प्रीफिल्ड सिरिंज जैसे फिरोजसंस लॉन्च कर रहे हैं, कि इस ड्रग में ये होता है कि यू हैव टू कम टू द हाईएस्ट टॉलरेबल डोज which you can sustain the patient, right? Because इसके अंदर higher, as the higher the dose, the more the side effects like nausea and constipation and gastrointestinal disturbances. So the doctor is trying to take the patient to the highest tolerable dose. तो अब क्या होता है कि या पेन है या अगर आपके पास इवन PFS है, तो आपको जो है ना वो you're fixed with that dose. But in the vial, you can not only take 0.5 milligram, you could also take 0.4 milligram, you could take 1 milligram, or you could take 0.75 milligram. तो ये dose flexibility जो है ना, ये बहुत important है. और इसी वजह से globally भी even the multinationals realizing this have started launching the vial presentation. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से, और इस वजह से भी कि जब हमने लॉन्च किया तो this is a technical point I'll just share just for your reference. This is a peptide. This drug is classified as a peptide. Ozempic is a peptide which is made from recombinant DNA technology. Ours also is exactly the same peptide made from the recombinant technology, biotechnology. जो फिरोजसंस ने लॉन्च किया वो पेप्टाइड है, but that's made from synthetic
केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इवन दो आई एम श्योर कि प्रोडक्ट के ऊपर उसका बहुत असर नहीं है, और जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया है तो वो देखभाल के अप्रूव किया है, लेकिन जस्ट एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल डॉक्टर्स कहते हैं यार जब ओरिजिनेटर वाज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एंड अ पेप्टाइड तो आप भी रिकॉम्बिनेंट पे ले आते। तो आई थिंक दो आर सम पॉइंट्स व्हिच गो इन आवर फेवर, and I think as the results come in the next quarters and in 2025, inshallah ta'ala, we'll see a phenomenal response of semaglutide. In how much time Pakistan's market for weight loss drugs is expected to reach peak year 100 billion, as 1 year sale of semaglutide oral version has been recorded. सो देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं, राइट? इसमें एक फैक्टर है when you calculate potential, how are you doing that? You're calculating potential looking at the indications, and you say, okay, this drug is the best drug for obesity. Okay, it's the first choice for obesity. Fine. तो आप कहते हैं अच्छा पाकिस्तान के अंदर obese लोग कितने हैं? तो आपने कहा जी पाकिस्तान के अंदर 40% of the people are obese. Okay. फिर आप कहते हैं अच्छा how many of these obese patients are actually seeking treatment every year? Now that's the trick question, right? Because a lot of people who are obese are not going for any treatment. तो पाकिस्तान का जो नंबर है वो बहुत लो है, मतलब जनरली दुनिया भर के अंदर लो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी सिर्फ 5 से 10% लोग जो हैं वो ये ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं। तो आप कहते हैं अच्छा ओके 40% are obese, or 30% are obese, I don't know the exact number, but 10% seek treatment, तो अच्छा अब ये नंबर हो गया टोटल पॉपुलेशन। फिर आप कहते हैं अच्छा how many of these patients will be able to afford 10,000 rupee or 8,000 rupee per month therapy for the next, then you take that cut। ओके ठीक है, इससे जब आप नंबर निकालते हैं पोटेंशियल का, तो you arrive at a smaller portion of the let's say the 100 billion potential for semaglutide in Pakistan, for example. So then what's going to happen? What's going to happen is that doctors have to be educated, patients have to be educated, they have to be convinced about the benefits of semaglutide, and as companies promote it, as more companies come in, उतना ही जो है ना इसका जो potential है वो actualize होता जाएगा। oral version जो है वो semaglutide का पाकिस्तान में भी अभी लॉन्च हो रहा है। सो ये इसके जो नेक्स्ट कंपाउंड्स हैं वो भी लॉन्च होंगे। तो ये क्या है कि एक मैराथन है, it's not a 100-meter dash, it's a marathon. Companies have to be committed for the long run. They must have a very good pipeline which keeps them updated in the forefront of the best offerings that are there। जैसे ओरल का लॉन्च हुआ है, अभी ओरल का लॉन्च पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल इतना ज़्यादा मुझे लगता है इतना ज़्यादा भी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। नंबर 1 क्योंकि वो महंगा है बहुत, यानी कि अगर हमारी थेरेपी मंथ की 10,000 रुपीज़ की है तो ओरल की थेरेपी जो है ना वो 25-30,000 रुपीज़ की है। तो आई थिंक दिस विल create an impact. It will be reserved for patients who are very averse to taking injections and who can also afford. But obviously with time, the prices will come down, and with time, the prices of even the injectables will come down. But that's a given, right? So इसका impact भी आएगा। फिर जैसे Mounjaro है, Mounjaro is a superior compound to semaglutide। जब Mounjaro launch होगी तो वो भी market share लेगी। तो all of this will happen, and the companies who have who position themselves for the long run with a good pipeline of GLPs and GIPs will continue to do well. And I think and it's not just Pakistan, हम भी इसको मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लेके जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस हमारी हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला 2025 के अंदर हम मल्टीपल कंट्रीज के अंदर इसकी एक्सपोर्ट शुरू कर रहे होंगे। तो
I think it's a phenomenal opportunity, and we can, as a generic company, we can create a lot of value for patients not only in Pakistan but globally. But जो आपका specific सवाल है कि ये अपने potential में कब पहुंचेगा, तो I don't think it's going to happen in 1 or 2 years के जो reported sales है सेमाग्लूटाइड की, ओरल की, इंजेक्टेबल की, वो अगले साल 100 बिलियन रुपए नजर आने शुरू हो जाएगी. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. तो आप जब उसकी क्वार्टरली सेल्स ट्रैक करेंगे of all the companies and how much they are achieving, तो you'll get an idea कि कितनी जल्दी वो सफर पूरा होगा. What's the current trend in international API prices, and do you expect further decline in prices considering significant correction in crude oil prices? हाँ, बिल्कुल. जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं तो उसमें बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एक बेनिफिट आता है. एट द सेम टाइम ये भी होता है अब्दुल्ला के मार्केट्स के अंदर कार्टेल्स होते हैं. तो वो चाइना के अंदर 10 कंपनियां हैं, दे होल्ड 70-80% ऑफ द सप्लाई ऑफ लेट्स से पर्टिकुलर एपीआई. तो अगर चाहें तो डिस्पाइट दैट आपको आगे पास नहीं करते या कम पास करते हैं. तो that factor still remains, but yeah, generally it should have an impact. It should improve the pricing. Please share industry and Macter outlook on volumetric growth going forward. Has the industry completely passed on the financial year 24 CPA adjustment in essential medicines? तो एसेंशियल मेडिसिन्स के अंदर जो हमें मिलता है वो जुलाई अगस्त के अंदर मिलता है, और फिर उसको कंपनियां इंप्लीमेंट करती हैं. तो डिपेंडिंग कि उनका कितना स्टॉक पाइपलाइन में था, तो उसका फिर इम्पैक्ट कुछ लैग से आता है. तो पिछले साल के एसेंशियल मेडिसिन्स के ऊपर तो सारा पास ऑन हो चुका होगा हर कंपनी का, मेरा ख्याल है. और अब इस साल का एसेंशियल मेडिसिन का अगेन जून एंड के बाद फिर जुलाई में हम सबमिट करते हैं, उसको अप्रूव करते हैं और फिर हम उसको करते हैं. और वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो है वो ओवरऑल इंडस्ट्री की देखें कम है. मतलब जब हम अगर आप IQVIA का नंबर देखते हैं, आई थिंक वी डिड नॉट इंक्लूड इट. आई वुड रिक्वेस्ट नवीद कि जब आप ये अपडेटेड स्लाइड डेक अपलोड करें तो उसमें वॉल्यूमेट्रिक नंबर को इंडस्ट्री का उसमें डाल दें अगर इफ दैट्स पॉसिबल. तो वॉल्यूमेट्रिक नंबर जो है वो कम है, और तो उसकी ग्रोथ कम है. आई थिंक इट हैड gone down to 1 or 2%, but if I am not mistaken, I think 3-4% के करीब अभी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आ रही है. and please don't take my word for it, I think वो numbers जरूर देख लीजिएगा. And I also understand that Macter की volumetric growth भी 2x time है of the industry, and हमारी जो जैसे value growth है वो 1.5x time है. तो I think इसी तरह से है. Is there any possibility that the government might backtrack on its decision? ये तो आपने बिल्कुल एक नाइटमेयर सिनारियो जो है ना वो ये सवाल कर लिया है. अगर फार्मा इंडस्ट्री को रोने ख्वाब आते हैं रात में, तो इसी तरह के वो ख्वाब होते होंगे कि वो गवर्नमेंट उसको बैक ट्रैक कर जाए. मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको. एंड आई थिंक अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है तो शायद ये ना होता ही ना. लेकिन आई थिंक चूंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, इसको SIFC ने लिया है और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ और प्रॉपर लॉजिक के साथ लिया है, तो आई डोंट थिंक कि ये बैक ट्रैक होगा. मतलब लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसका चांस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी. गेट्स इज लॉन्चिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. लॉन्चिंग इंसुलिन, गेट्स की इंसुलिन तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है. गेट्स ने अभी रिसेंटली सेमाग्लूटाइड लॉन्च किया है, एक कंपनी ने ओरल लॉन्च किया है, एंड देन देयर अदर कंपनीज व्हिच विल आल्सो बी कमिंग इनटू द मार्केट. तो देखिए ये तो होता रहेगा, बट इसमें जो 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 इसका पोटेंशियल है ना बहुत ज्यादा है. यानी कि I also believe that कि पाकिस्तान के अंदर 100 बिलियन रुपीस का पोटेंशियल है, कम से कम भी इस सेमाग्लूटाइड का और ये GLPs का. और ये शिफ्ट होगा बिटवीन वन कंपाउंड टू द अदर. बट अब 100 बिलियन के अंदर मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कंपनियां आएंगी और बहुत सारी कंपनियां अपने एफर्ट्स और अपने स्किल के हिसाब से अपना एक शेयर लेंगी.
बट हम ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी पोटेंशियल का कोई और प्रोडक्ट नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। एंड ऑब्वियसली जो कंपनियां पहले आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्टर पहले आई, तो मैक्टर ने जाके जब बात की तो डॉक्टर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब गेट्स आ रही है, तो गेट्स ऑलरेडी इज कमिंग व्हेन टू कंपनीज मैक्टर एंड फेरोसन्स आर ऑलरेडी have their products used by the doctors. They have developed trust on the quality of the product, and they are happy with the results. So what's the incremental benefit then of another same offering? So obviously they will take a share because they're a good company and they have large resources. लेकिन ये स्पेशलिटी है, इसमें इस तरीके से नहीं होता। एंड देन तो वो अपना शेयर लेंगे, जो अच्छा शेयर लेगा उसकी ज्यादा सेल्स होगी। बट आई थिंक कंपटीशन से बेहतरी आएगी, मेरा ख्याल है ओवरऑल मार्केट एक्सपेंशन में भी, और पेशेंट्स के लिए भी बेहतरी आएगी, बिकॉज जब कंपटीशन होता है तो प्राइसेस भी बेहतर होते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल गुड। इन ये इसेंशियल नॉन इसेंशियल का मैंने जो है वो आपको बता दिया, मैक्टर का रेशो। Based on my understanding, your top 10 revenue-wise products are mostly NE. NE से Murad probably non-essential. Okay. Could you clarify the NE composition in Macter's revenue? तो हाँ, ये मैंने कर दिया, but as I've also mentioned कि ये जो non-essential का जो है ना, ये बहुत rapidly change हो रहा है। अब जैसे for example सेग्लूटाइड हमने जो लॉन्च किया है, समाग्लूटाइड हमारा जो ब्रांड है वो है सेग्लूटाइड है। तो सेग्लूटाइड जो है वो नॉन एसेंशियल में आता है, और सेग्लूटाइड जो है वो लेट्स से हमारी लैंडिंग 10 बिलियन की है। इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10.5 बिलियन पे लैंड करेंगे हमारा रेवेन्यू जून पे। और अभी उसका कंपोनेंट जो है वो 50-60 मिलियन का हाफ ईयर पे आ रहा है, लेकिन in 12 months we are seeing it at 600 million, maybe 1 billion। तो वो ड्रामेटिकली उसको शिफ्ट करेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। आज का मैंने बताया कि हमारा तकरीबन 35% नॉन एसेंशियल और 30 to 40% non-essential. I'm sorry, I don't have the exact number in mind, but ये change होगा। How much price increase has Macter implemented since deregulation? तो आप देख लें कि इस साल के अंदर हमारा जो है, देखिए एसेंशियल, क्योंकि हमारा तो मेजॉरिटी पोर्टफोलियो एसेंशियल है, राइट, तो उसके अंदर कैप है 8-10% की। तो फॉर 70% तो आपका समझे 8-10% है, और बाकी जो नॉन एसेंशियल है उसके अंदर हमने कहीं 20% लिया है, कहीं 25% लिया है। बट एज आई सेड दैट उसका जो टोटल इम्पैक्ट इस साल में आ रहा है वो 17% का आ रहा है। तो दैट्स द स्प्लिट। उसमें वॉल्यूम्स का इम्पैक्ट होता है कि किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस बढ़ाई और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम के अंदर। तो इस तरीके से है। Mac sales, Mac 24 grew by not 58। Macter का जो Mac है वो about 36% है, 35-36% है। और उसी 36% को जो मैंने आपसे शेयर किया था कि अबाउट समझे 20% जो है वो प्राइस इंक्रीज से आ रहा है, और 17% जो है वो वॉल्यूम से आ रहा है। How has Macter managed volumetric growth? हाँ, so उसी हम न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। Those new products are doing very well. So for example, हमने इनहेक्सा लॉन्च की, जो हेपरिन है, वो पहले साल में we are expecting there is going to be 300 million rupee product, and so that's a phenomenal number by any standard। आमतौर पे अगर कोई 100 मिलियन की पहले साल में सेल होती है तो that's considered to be a blockbuster launch। तो that's 300 मिलियन। इसी तरीके से हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर पिछले 3-4 सालों से हम एक बहुत ही ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमने कुछ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया कि अब ये बिल्कुल जेनरिक प्रोडक्ट्स हो गए हैं, और इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें प्रोमोशनल टाइम स्पेंड नहीं करना। जब प्रोमोशनल टाइम स्पेंड नहीं करना तो मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट उसके अंदर जो है ना वो नहीं आनी चाहिए। जब सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट में रिड्यूस कम करता हूँ, वो 25-30% से मेरी प्राइस स्लैश होती है, तो वो उस प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, राइट, बिकॉज फिर मैं उसको ट्रेड पे ले जाता हूँ, ट्रेड मार्केटिंग पे ले जाता हूँ। तो हमने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जिनको हम समझते थे कि इसके अंदर प्रोमोशनल टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए, हमने उनको ट्रेड मार्केटिंग में लेके गए। दे हैव डन वेरी वेल। हमने जिन प्रोडक्ट्स पे फोकस किया फॉर स्पेशलिटी, फॉर हमारे बायोस, हम वी आर द नंबर 1 कंपनी इन बायोसिमिलर्स,
तो जिन प्रोडक्ट्स को हमने उस पे फोकस किया, they've done very well, you know, we've done exceedingly well with all of our brands, mashallah. So that's why, you know, the volumetric growth is coming. What will be the revenue contribution from new products this year? I think this year revenue contribution from new products will be around 500 to 600 million rupees, mashallah. And then that's a phenomenal number. I think we might end up being the number one company in terms of new product revenues this year. और generic basically इसकी जिस प्रोडक्ट का पेटेंट ऑफ हो जाए और तो अब वो जेनरिक हो जाती है, जेनरिक क्लासिफाई होती है, उसको कोई भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। जब तक पेटेंटेड होता है तो उस वक्त सिर्फ जो 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 ओरिजिनेटर होता है, जिसने रिसर्च की होती है, वो उसको मार्केट में ला सकती है। तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पेटेंटेड ड्रग एंड अ जेनरिक ड्रग। Wow, I think I've done all the questions. अगर कोई और सवाल हैं आप पूछना चाहें, verbally पूछना चाहें तो, और if there are any follow-on questions after my answers, please go ahead. Assalamu alaikum. Asif Abdullah Umar from NBP Funds here. Thank you very much for answering in such a detailed manner. मेरे पास follow-up questions with regards to market potential of semaglutide है. जैसे डायबिटिक मार्केट है पाकिस्तान में, आई थिंक इंसुलिन और टैबलेट्स को कंबाइन कर लें तो वो भी अराउंड 50 या 55 बिलियन बनता है। तो मुझे नंबर्स में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि गिवन द फैक्ट शॉर्ट टर्म में बेशक ये 100 बिलियन का पोटेंशियल रीच नहीं होगा, बट हाउ लॉन्ग, लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स में इस तरीके से रीच होगा, या एक ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री क्या होगी आपके नज़दीक? तो देखिए, जैसे डायबिटीज के अंदर जो है ना, वो ग्लोबली जो रिपोर्ट्स हैं, एनालिस्ट रिपोर्ट हैं, वो ये सजेस्ट करती हैं कि 50 to 60% ऑफ the diabetic market, or the diabetes patients, more specifically 50 to 60% of the diabetes patients should be on semaglutide or tirzepatide or these GLPs, right? So that's a huge number. तो आई थिंक ये 10 साल में नहीं होगा, लेकिन मेरे साले 5 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत ड्रामेटिकली जो है ये 10 साल में तो फॉर श्योर, मतलब आई डोंट वांट टू मेक अ वाइल्ड क्लेम, लेकिन क्लियरली आई थिंक कि देखें, अगर आप ओलंपिक को देखें तो ओलंपिक इन 3 years टच, आई थिंक they've gone above 3 billion rupees in sale, right? So let's say out of a 100 billion potential, in 3 years they've taken 3 billion, and ये patients और ये prescriptions compound होती हैं, तो पहले साल उनका 500 million का revenue था, दूसरे साल वो 1.5 billion का हो गया, तीसरे साल वो 3.5 billion का हो गया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि 5 साल के अंदर 5 टॉप कंपनीज जो हैं वो they should be taking 5 to 10 billion rupees of revenue each, and this we should be at 40-50 billion के ऊपर हमें होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये इतना नागुज़ीर नहीं है, बिकॉज जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना इनटू पेशेंट्स, तो एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन के, देखिए इसका जो पेशेंट है वो अगर वो 3 महीने के लिए आ रहा है तो एक डिफरेंट आपका मॉडल फोरकास्ट करेगा। अगर डॉक्टर्स का ट्रेंड तब्दील होता है, और जैसे दुनिया भर के अंदर है कि इंसुलिन खत्म हो रही है, क्योंकि इंसुलिन के बहुत बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि सेमाग्लूटाइड लेने से नॉट ओनली जो है आप अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे होते हैं, डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, बट योर हार्ट and your liver, and your organs are getting protected, and your kidneys are getting protected. So, doctors will shift, and they will shift their patients to lower doses of insulin by putting them on GLPs. They will not put a lot of patients on insulin. They will first put them on the GLPs, on semaglutide. So ये होगा, but this is an awareness thing, this is a usage thing, adoption ladder होता है, जिसके अंदर जो KOLs होते हैं, वो की ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, they're more into the studies, वो पहले अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको देख के नीचे लोग फॉलो करते हैं। तो आई थिंक 5 से 10 साल में, 5 साल में तो significant, I think 50% of that potential would have been covered.
and I think this will just grow. देखिए price कम होगी, obviously as more competition comes in तो ठीक है, the yield per patient is going to decrease, but at the same time the stay per patient will also increase. So just like insulin is taken lifelong, people will be taking semaglutide lifelong. They will go for microdosing. Microdosing makes it a lot cheaper. यानी कि मैंने 3 महीने में अपने ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स, अपने वेट लॉस ऑब्जेक्टिव्स या अपने शुगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, और अब 3 महीने के बाद मैं 5.5 mg नहीं ले रहा, मैं 0.25 mg वंस अ वीक पे आ गया, मेरी एकदम से कीमत कम हो गई. या मैं इवन डॉक्टर्स विल यूज इट जस्ट वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ. So all of this is happening and will happen, and the usage will increase, and it's a function of how many patients are on therapy and how long they are on therapy. And I think पाकिस्तान के अंदर इतने unfortunately इतने diabetics हैं, और अगर आप समझें सही है, ट्रीटमेंट रेट पाकिस्तान के अंदर कम है, but even then it's and the other thing is कि हम we are talking about indications pertaining to approved indications like obesity and diabetes, but there are a lot of patients, there are a lot of people who are not obese, but they want to take it to reduce weight. तो weight reduction के अंदर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर मार्केट और ड्रामेटिकली बढ़ जाती है. So obviously we don't promote that, but that's a fact. That's something which is happening even now globally, even in the US and elsewhere. तो आई थिंक कि 10 साल से पहले जो है ना ये चीज हो जाएगी मेरा ख्याल. राइट. सो मैं ये समझाऊं कि जो बेसिक मेजर ग्रोथ आ रही होगी वो फ्रॉम इंसुलिन शिफ्ट आ रही होगी, अगर मैं देखूं ब्रॉडली. नहीं, तो क्योंकि देखिए इंसुलिन जो है, इंसुलिन पेशेंट्स ऑन इंसुलिन अबाउट 20% ऑफ द, यू हैव टू लुक एट दीज नंबर्स, राइट? सो व्हाट परसेंटेज ऑफ डायबिटिक्स आर ऑन इंसुलिन इन पाकिस्तान? So that is going to be maybe 25-30%. So, but there are 15-20% who are on oral drugs, but they are not well controlled. They are 25-30% of the diabetics are obese. They should be on this, even though they are controlled, but they are obese. Or they have जो इसकी जो indications हैं कि if you have high risk factor for cardiac disease, if you have high risk factor for kidney disease, तो वो जो 50% है उसके अंदर एक पोर्शन है जो कि इंसुलिन का है, बाकी दूसरे भी हैं. Right, right. And so lastly, since you're launching many new products, तो gross margins माशाल्लाह आपके 47% record हुए हैं. But going forward, as we have seen with many local companies के margins north of 55-60% होते हैं. So do you see such trajectory for Macter Pharma going जी forward? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरू में जैसे मैंने अर्ज किया था कि हम अपने आप को इंडस्ट्री बेंचमार्क से पीछे देखते हैं और हम उसको रैपिडली उसको जो है ना उस चीज को करेक्ट करने जा रहे हैं. And so that's the strategy. Our gross margins should be with the industry benchmarks, and our profitability, also, as a percentage of sales, it will also increase, inshallah ta'ala. So yeah, that's the plan. That's the plan. Oh, thank you, Asif sir. Thank you very much for your time. You're most welcome. Most welcome. सुफियान साहब का सवाल है कि macro conditions have remained stable, proving beneficial. बिल्कुल सही है. But what would be your assessed potential impact on gross margin caused by devaluation of PKR? So देखिए, अगर आप ये इसको एक सिंपल मेट्रिक बना लें कि लेट्स से हमारा ग्रॉस मार्जिन इस वक्त 45% आ रहा है, और उस 45% के अंदर 80%, 70% is going to be our 65-70% is going to be our APIs, the raw materials and the packaging materials, and all of them are linked to they are imported, right? Mostly all of them are imported. So anytime there is a deval, so that moves our cost of goods sold. And because overall inflation भी linked होती है, तो जितनी डिवैल हो रही है उसकी वजह से अगर हमारी समझें 55% जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो उतने परसेंटेज से हिल जाएगी. अब जो ऊपर प्राइस इंक्रीज हमारे पास है उसमें
एक 8 to 10% है एसेंशियल के लिए, आई थिंक, और 10% कैप होता है, और फिर जो नॉन एसेंशियल्स हैं वो जो है ना वो अब अनकैप्ड हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर एक रीजनेबल डीवैल, जैसे पिछले सालों में हम लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि हाँ यार हर साल 10% के करीब डीवैल हो जाता है, तो in the case of a reasonable deval, we are covered, because 5 से 6%, 8% प्राइस आपने बढ़ा ली नॉन एसेंशियल पे, और 15%, 20% के रेंज में आपने बढ़ा ली अपनी नॉन एसेंशियल में, तो ये रीजनेबल डीवैल कवर कर लेता है। अब मसला आता है जब कोई मेजर डिवैल्यूएशन होती है जैसे पिछले सालों में, तो फिर वहां पे मार्जिन स्क्वीज होते हैं, and then all the combined impacts of new products being launched and the volumetric growth and overhead absorption वो सारे फिर उसमें play करते हैं। How much improvement in gross margins will you attribute to shift away from institutional sales? तो हम लोग एक जमाने में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत करते थे, बट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये मसला था कि जो मल्टीनेशनल्स के लिए करते थे तो उनको प्राइस इंक्रीज मिलती नहीं थी, तो जब उनको प्राइस इंक्रीज नहीं मिलती थी तो फिर हमें वो हमारे टॉलिंग रेट्स नहीं बढ़ाया करते थे, तो वो देन दैट बिजनेस वाज बिकमिंग मोर एंड मोर अनटेनेबल। बट दैट वाज लाइक 40-50% ऑफ आवर कैपेसिटी। हम लोग एक जमाने के अंदर पाकिस्तान की टॉप मल्टीनेशनल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, एंड दैट वाज आवर मेन बिजनेस। बट देन we had to say no to that, but then we were left with a lot of capacity, so we went into institutional sale. Institutional sales में दो issues आते थे, volumes तो अच्छे मिल जाया करते थे, लेकिन उसमें margins कम होते थे, especially tender business के अंदर, और फिर उसमें जो receivables थे वो बहुत लंबे फंसते थे। यानी कि अभी भी पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना वो पेमेंट्स नहीं किए हैं अपने ड्यूज के, तो हम ओम्बड्समैन के पास भी हैं, हम गवर्नमेंट को भी कंप्लेन करते हैं, सारी इंडस्ट्री कंप्लेन कर रही है, उनसे बात कर रही है, तो ये डबल्स में वहमी आया करती थी। तो हमने फिर ये किया कि वी सेड ओके, वी विल ओनली डू इंस्टीट्यूशनल बिजनेस विच इज एज, जिसका ग्रॉस मार्जिन उतना ही अच्छा हो जितना हमारा स्ट्रीट सेल का अच्छा हो, विच मीन्स कि वी आर नॉट गोइंग टू सेल कॉमन ड्रग्स, वी आर ओनली गोइंग टू सेल वेरी unique and differentiated drugs to institutions जहाँ पे competition नहीं है, तो फिर हम एक reasonable price maintain कर सकते हैं। और दूसरा हमने फिर ये किया कि हमने कहा कि हम कैश तो मतलब हम there has to be a distributor up front जो हमें एडवांस पेमेंट करे और वो फिर रिसीवेबल डिले का रिस्क ले। तो जब हमने ये किया तो हमारी सेल 1.5 बिलियन से कम होके 200 मिलियन पे आ गई लास्ट ईयर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी न्यू दैट दिस वाज द वे फॉरवर्ड, तो इस साल हम 400-500 मिलियन पे वापस हैं। All of it is cash, and the margins are as good as our street sales. So we've converted, alhamdulillah, in 3 years we've converted a very unattractive segment to a very attractive segment, alhamdulillah. तो ये डेफिनेटली इससे फर्क पड़ा है, बिकॉज समझें कि 6-7 बिलियन रुपीस की सेल के ऊपर अगर 1 बिलियन की हमारी इंस्टीट्यूशनल सेल थी, एंड दैट वाज जस्ट मेंट फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो ऑब्वियसली उसके अंदर मार्जिन्स अच्छे नहीं थे। सो दैट हैज डेफिनेटली, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऐड अप, बिकॉज हमें सिस्टमिकली और सस्टेनेबली कंपनी को इंडस्ट्री बेंचमार्क पे लेके जाना है, तो वी हैव टू टेक ऑल स्टेप्स अक्रॉस ऑल एरियाज जहाँ पे हम ऑप्टिमाइज करें चीज़ों को, बिजनेस मॉडल को। और सुफियान ने पूछा है कि इज देयर एनीथिंग यू कुड शेयर ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर सब्सिडियरी मिसबा कॉस्मेटिक्स? मिसबा कॉस्मेटिक्स जो है वो इज डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें was badly affected because of the import restriction of luxury products, and overall जब इन्फ्लेशन होता है तो वैसे ही जो है वो मार्केट्स वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी हमने ये किया है कि वी आर शिफ्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन इम्पोर्ट मॉडल टू अ लोकल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। तो वो स्टेजेस में हम कर रहे हैं, यानी कि जब हमने लॉन्च किया था तो द प्रेमिस वाज वेरी हाई क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच आर हलाल and properly marketed under the Masarrat Misbah brand in Pakistan. So हमारी जो products थी वो हम टर्की से import कर रहे थे। Then again with the deval and the increasing duties and the restrictions on import, तो फिर
हम उसको अभी हमने शिफ्ट कर लिया है into local filling, so that we are buying the bulk, and because of our experience of pharmaceutical manufacturing, that's very easy for us. हम उनको जो है वो सेम प्रोडक्ट्स को जो है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो उससे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में हम उसको जो है वो फुल मैन्युफैक्चरिंग में लेकर आएंगे, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें काफ़ी गैप है मेरा ख्याल है, और स्पेशली एट द अगर अभी जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो हाई टियर्ड हैं, हम हमारी प्रीमियम प्राइसिंग है, लेकिन इफ़ यू कम टू द मिड टियर और इवन गो टू द लोअर टियर वेयर द वॉल्यूम्स आर, वेयर द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन इज, तो वहाँ पे काफ़ी गैप है, एंड वी इंटेंड टू फुली कैपिटलाइज ऑन दिस। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड मिसबा कॉस्मेटिक्स जो है वो टॉप लाइन तो ग्रो कर रही है, लेकिन प्रॉफिटेबल भी होगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन द कंसर्न हियर, but I think last year we almost broke even. This year it will be it will contribute to the consolidated financial position, and then I think going forward Misbah Cosmetics को हम पाकिस्तान का एक major player बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। You're most welcome, Sufyan. Thank you so much. Okay, so there are no further questions. We can end our session now. And I'd like to thank every one of you for taking out time, especially during Ramadan. And connect with you soon again. And again, thank you to Azimai for all the detailed explanations. And a lot of learning for all the attendees here. My pleasure. My pleasure. Thank you everyone for joining us. Jazakallah Okay. khair. Okay, Have a good day. Have a good day, everyone. yeah. Salam. Thank you everyone. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.